हेलो स्टूडेंट्स, आज आम स्टार्ट करमा इंटीग्रेशन लास्ट एक्सरसाइज दैट इज एडिशनल एक्सरसाइज लास्ट के नंबर अच्छे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई एक्स साइन क्यूब एक्स dx इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 हमको प्रूव करवार अच्छे। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई एक्स साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू लेट आई. Okay, now using the property integration from 0 to a f of x dx is equal to integration from 0 to a f of a minus x dx, we get this is integration from 0 to pi minus x sin cube pi minus x at sin pi minus x or dx at sin pi minus x is equal to sin x, so sin cube pi minus x is equal to sin cube x. So this is equal to integration from 0 to pi sin cube x dx minus x into it is sin cube x dx integration from 0 to pi. Now this is equal to I. Okay, now I is equal to 0 to pi sin cube x dx minus I. So I टाके जब हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या नहीं पका कहाँ से जीवा. So this is 2I is equal to integration from 0 to pi sin cube x dx. Okay, now we have to find the value of this. So pi टा constant है हमें बाहर क्या नहीं पका मा. So हमारे इंटीग्रेशन टा है 0 to pi sin cube x dx. सो sin क्यूब एक्स dx इंटीग्रेशन करा भल लगे आम काना करमा sin क्यूब एक्स के दुई भाग रे डिवाइड कर दो. सो फर्स्ट है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई sin क्यूब एक्स इज इक्वल टू sin स्क्वायर एक्स इंटू sin एक्स. ओके, नाउ sin स्क्वायर एक्स के आम काना करमा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू sin एक्स dx. Now taking cos x as t, cos x के जगह में t नहीं जेमे, so now taking cos x is equal to t, this implies minus sin x dx is equal to dt. Now h वेरिएबल टा x रू t के चेंज है तो हमारे लिमिट भी एज यूजुअली x रू t के चेंज है. So if x is equal to 0, this implies t is equal to 1. If x is equal to pi, this implies t is equal to minus 1. So now the integration becomes 2i is equal to, so this implies 2i is equal to integration from, so pi to 0 to pi, that is 1 to minus 1, 1 to minus 1, 1 minus cos square x, that is 1 minus t square, and sin x dx is equal to minus dt minus dt. So minus टा क्या मैं करमा बाहर क्या नहीं पकामा इस जगह माइनस टा मल्टीप्लाई कर दो. सो ये माइनस टा काना है बा आम जब लिमिट चेंज कर दमा माइनस टा आसी जीवा, सो माइनस माइनस प्लस है जीवा. सो नाउ द इंटीग्रेशन equal to pi, this is minus 1 to 1 minus t square dt, and the integration of this is equal to pi 1 रे इंटीग्रेशन टा है t and t cube रे इंटीग्रेशन टा है t square रे इंटीग्रेशन टा है t cube by 3. So this is from minus 1 to 1. Okay, so this is equal to pi first 1 minus 1 by 3 minus 1 minus plus 1 by 3. Okay, so this is equal to pi, this is 1 minus plus 1 2 minus 2 by 3, and this is equal to pi 6 4 by 3. So 2i is equal to 4 pi by 3, 2i is equal to 4 pi by 3, I is equal to 2 pi by 3, which is we have to prove 2 pi by 3. Okay, now next number 36, that is integration from pi by 5 to 3 pi by 10 sin x plus cos x dx. So सही फॉर्मूला और सही प्रॉपर्टी ही यूज करमा, दैट इज
integration from a to b, can formula integration from a to b f of x dx is equal to integration from a to b f of a plus b minus x dx. Okay, so this integration becomes, if this is equal to I, this integration becomes integration from pi by 5 to 3 pi by 10 sine 3 pi by 5 आम pi by 5 plus 3 pi by 10 is equal to केते हम this is जदि 10 आसला 2 pi plus 3 pi is equal to 5 pi by 10, so this is equal to pi by 2. Okay, जदि मैं sin a plus b minus x, a plus b minus x से प्रॉपर्टी यूज कर में बाय cos sin pi by 5 plus 3 pi by 10 minus x and cos pi by 5 plus 3 pi by 10 minus x dx. So एबे ई pi by 5 plus 3 pi by 10 जगह रे मैं pi by 2 पुट करी पारबे. Okay, now this integration equal to integration from pi by 5 to 3 pi by 10 sin pi by 2 minus x, this is cos pi by 2 minus x, sorry, sin pi by 2 minus x, this is plus cos pi by 2 minus x dx, and this is equal to integration from pi by 5 to 3 pi by 10 cos x by, this is cos x plus sin x dx. Now this is also I. So e I के और e I के जदि मुझे ऐड कर में काना आसवा, so 2i is equal to 2i is equal to, इस जगह देखो LCM टा sin x plus cos x, इस जगह भी LCM टा sin x plus cos x ही अच्छी. So integration from pi by 5 to 3 pi by 10 integration टा हला कोई एमर LCM टा हला cos x plus sin x, इस जगह भी cos x plus sin x अच्छे, आउ ऊपर काना जी जगह sin x, इस जगह cos x, so sin x plus cos x dx. If we add this I and this I, हमें तो पामा. So now sin x plus cos x, sin x plus cos x cancel out हो जाएगा, रहे लगे थे 1 integrate कर ले. So this is equal to x 1 रा integration लगे x from pi by 5 to 3 pi by 10. So this is equal to 3 pi by 10 minus pi by 5. This is equal to 10. 3 pi minus 2 pi is equal to pi by 10. So 2i is equal to pi by 10. I is equal to pi by 20. Okay, number 36. Next question. One of the important question of integration. कहते integration आमे ई type रो question माने आमे करिछु आमे indefinite integral ले करिछु. किंतु जेन जगह रे मॉडुलस फंक्शन आसीगला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आसीगला, से जगह रे हमें खाली यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल रे ही हमें तार इंटीग्रेशन काढी परबा. ओके, ई जगह रे तीनटा क्वेश्चन देखो 37 38 39 रे मॉडुलस ऑफ cos x, मॉडुलस ऑफ x minus 1, x minus 2, x minus 3, sin of mod x, cos of mod x, ई टाइप रे क्वेश्चन के हमें केनता करे सॉल्व करबा एबे हमें देखबा. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to pi, integration from 0 to pi mod of cos x dx. Okay, modulus function टा define करता है जे modulus of x is equal to x if x greater than 0 and minus x if x is less than 0. Okay, equal to जेंथरे लगे देले भी. Okay ना, mod of cos x टा काना से जीवा, mod of cos x is equal to cos x if cos x greater than equal to 0 and minus of cos x if cos x less than 0. Okay, so एबे देखो integration from 0 to pi means first quadrant to second quadrant if whole total time. So first quadrant रे cos टा positive, so ये जगह रे positive, ये जगह रे negative.
So 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, this is the positive, means x greater, cos x greater than 0. So it is cos x. And from pi by 2 to pi, cos x is less than 0, negative. So this is minus cos x. So now the integration of this is equal to integration from divide कर दें first वाला 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 mod of cos x dx plus pi by 2 to pi mod of cos x dx. So from 0 to pi by 2 it is positive, so this is cos x, and from pi by 2 to pi it is minus cos x. So the integration equal to integration from 0 to pi by 2, this is cos x dx, and this is minus cos x, so minus integration from pi by 2 to pi cos x dx. h mod of cos x टा minus आसो से दिले गोटे minus टा आसी. Okay, now this is equal to integration from cos x sin x from 0 to pi by 2 minus इटा भी हला sin x from pi by 2 to pi. So this is equal to sin pi by 2 minus sin 0 minus sin pi minus sin pi by 2, and this is equal to sin pi by 2 टा हिगला 1 minus sin 0 0 minus sin pi टा हिगला 0 minus 1. So this is equal to 1 minus minus 1, so 1 plus 1 is equal to 2. So टा integration of from 0 to pi mod of cos x dx. sin x रे काना ही था sin x from 0 to pi ई जगह जदि mod of sin x था काना sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट रे और सेकंड क्वाड्रेंट रे पॉजिटिव, सो ई जगह रे दुई भाग रे डिवाइड करवा ले नहीं पड़े. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू pi sin x dx. h from 0 to pi sin x is always greater than equal to 0. Okay, sin x टा minus pi by 2 रे pi by 2 थे, minus pi by 2 रे 0 भितर minus minus sin x, and 0 to pi by 2 रे it is plus sin x. Okay, next question. That is integration from 1 to 4 mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3. Okay, so starting from this, I first लिखिदेमा mod of x minus a. Define केंदे लिखा. This is x minus a if x greater than equal to a, and minus of x minus a if x is less than a. Okay, so तीनटा एबे x minus 1, x minus 2, x minus 3 केंता हिसाब डिफाइन है. So x minus 1 mod is equal to x minus 1 if x greater than 1, greater than equal to 1, and minus of x minus 1 if x less than 1. Okay, mod of x minus 2 is equal to x minus 2 if x is greater than equal to 2, and minus of x minus 2 if x is less than 2. Mod of x minus 3 is equal to x minus 3 if x is greater than equal to 3, and minus of x minus 3 if x is less than 3. Okay, एबे इस जगह देखो 1 to 4 के हमें तीन भाग रे डिवाइड करमु. फर्स्ट है 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4 तीन भाग रे डिवाइड करमु. कैंसिल तीन ही जगह रे 1 to 2 रे इटा पॉजिटिव, इटा नेगेटिव जेतु 1 to 2 रे x minus 2 टा नेगेटिव आसबो, 2 टा लेस देन x टा लेस देन 2 हबो. ई जगह रे भी लेस देन हबो. 2 to 3 रे इटा पॉजिटिव, इटा नेगेटिव. Okay, and 3 to 4 रे all are positive. So for this we divide this into three parts. So first part, or integration from 1 to 4 mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 dx is equal to, we divide this into three parts. So first part, integration from 1 to 2
mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 dx. Okay, first part. Second one, plus 2 to 3 mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 dx. And 3 to 4, this is mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 dx. ओके, तीन केस रे मैं बाहर कर देवा. फॉर फर्स्ट केस, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 mod of x minus 1 mod of x minus 2 mod of x minus 3. 1 to 2 रे only this is positive. h x greater than 1, x टा यदि a ग्रुप बढ़ला तो आम कण पामा x minus 1 पाम. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 mod of x minus 1 टा में x minus 1 ही पामा प्लस 1 to 2 रे 1 to 2 इंटरवल रे x minus 2 टा के पामा x टा less than 2. 1 to 2 means x is less than 2, so we get minus of x minus 2. So this is minus x minus 2. And mod of x minus 3, x is less than 3. x is less than 3. 1 to 2 with अच्छे means 3 रू छोड़ है. So this is minus of x minus 3. Plus integration from 2 to 3, 2 रू 3 भितर means 2 रू बड़ 3 रू छोट, 2 रू बड़ 3 रू छोट means x टा 1 रू तो बड़ है, 2 रू बड़ means 1 रू तो बड़ है. So this is x minus 1 रो mod टा हमें x minus 1 ही पेमा. x minus 2 टा 2 रू बड़ है x minus 2, so plus x minus 2. 2 रू 3 रे 3 रू छोट means हमें mod of x minus 3 टा minus x minus 3 minus of x minus 3 plus integration from 3 to 4. 3 to 4 means 3 रू बड़. ओके, 3 टा यदि बड़ हेले 3 रू बड़ हेले कना बा एटा x minus 1 आसबा, एटा भी पॉजिटिव आसबा, एटा भी पॉजिटिव आसबा. सो दिस इज x minus 1 plus x minus 2 plus x minus 3 dx. Now integrate this. Okay, first के solve कर दमा. Okay, so this is equal integration from 1 to 2 x minus 1 plus minus x plus minus plus 2 minus x and minus plus 3. Okay, dx plus integration from 2 to 3. This is x minus 1 plus x minus 2 minus x plus 3 dx. And last one, integration from 3 to 4, x minus 1 x minus 2 x minus 3, x minus 1 plus x minus 2 plus x minus 3 dx. Okay, now adding this, जगह देखो x x कटिगला, जगह भी गोटे x आ गोटे x कैंसल आउट हो रहा के. So this is 1 to 2 3 plus 2 5 minus 1, it is 4 minus x dx plus 2 to 3 integration from 2 to 3 x plus 3 minus 1 minus 2 0, so x dx plus integration from 3 to 4 x plus x 3x minus 1 minus 2 minus 3 minus 6 dx. Now integration of this is equal to इतर इंटीग्रेशन होला 4x minus x square by 2, 4x minus x square by 2 from 1 to 2 plus x square by 2 from 2 to 3 plus 3x square by 2 minus 6x from 3 to 4. Now solve this. So 2 into 2, 4 into 2, 8 minus 2 square by 2, that is 4 by 2 minus
4 into 1 4 minus 1 by 2 काना कराला आमे लिमिट पुट कराला फर्स्ट 2 पुट कले आमे 8 minus 4 by 2 minus 4 minus 1 by 2 plus 3 put karma that is 9 by 2 minus 4 by 2 plus अब 4 put karma first then 3 put karma 4 put kale 4 square 3 into 4 square 16 into 3 or 3 into 16 by 2 minus 6 into 4 that is 24 minus okay minus 3 into 3 into 3 27 by 2 minus 6 into 3 that is 18 okay now solve this okay we write this here plus 4 square that is 3 into 16 by 2 minus 24 minus 3 9 27 by 2 minus 18 okay now this is equal to 4 by 2 is equal to 2 so 8 minus 2 6 minus 4 minus minus plus 1 by 2 plus 9 by 2 minus 4 by 2 that is 5 by 2 plus 3 into 8 by 16 by 2 8 8 into 3 24 24 minus 24 cancel out होगला minus 27 by 2 इटा cancel out हो 27 by 2 minus minus plus 18 so this is equal to 18 plus 6 24 minus 4 20 minus यदि 2 कॉमन नहीं जो प्लस 2 कॉमन नहीं गला 1 plus 5 minus 1 plus 5 minus 27 so this is equal to 20 plus this is minus 21 by 2 so this is 40 minus 21 by 2 so this is 19 by 2 और टिके कैलकुलेशन हमको करवार लगे पड़वा किंतु कैलकुलेशन यदि परफेक्ट थिबा हमें आंसरटा इजीली पाई जाबा ओके फर्स्ट हमको सही मॉड्यूलस फंक्शनटा बुझवार लगे पड़वा आइदर हमें इटा के सेपरेट करके कले भी चलबा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 mod of x minus 1 dx plus integration from 1 to 4 mod of x minus 2 dx plus integration from 1 to 4 mod of x minus 3 dx एंड से जगह फिर सेपरेट करवा ले पड़वा 1 to 4 mod of x minus 1 रे गुटे ही हबा mod of x minus 2 लगी 1 to 2 एंड 2 to 4 गुटे लिमिट रहबा x minus 3 रा लगी 1 to 3 एंड 3 to 4 आ गुटे लिमिट रहबा हमें सेपरेट करके भी हमें इंटीग्रेशन काढी पारबा ओके कैलकुलेशन टिके खाली देखि कि प्लस माइनस टिके भूल हो गला क्वेश्चन टा भूल okay next question number 39 that is integration from minus pi by 2 to pi by 2 sin of mod x plus cos mod x so mod x ta define is mod x if x is less than 0 it is x minus x and if x is greater than 0 it is x so negative और positive दुटा अच्छे सो आम कौन करें इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 to 0 गोटे वैल्यू आउ पाई बाय 2 और 0 to पाई बाय 2 आ गोटे वैल्यू नेगेटिव साइड गोटे नहीं कि ना आ गोटे पॉजिटिव साइड ना सो माइनस पाई बाय 2 to 0 साइन ऑफ mod x प्लस cos ऑफ mod x dx प्लस 0 to पाई बाय 2 साइन ऑफ mod x प्लस cos ऑफ mod x dx and here this is equal to minus pi by 2 to 0 sin of mod x as it is negative this is sin of minus x plus cos of minus x dx plus 0 to pi by 2 sin of x plus cos x dx h positive रे x ta x greater than 0 रे mod of x ta x okay now this equal to integration from minus pi by 2 to
0 sin of minus x minus sin x plus cos of minus x cos x dx, as this is even function, cos of minus x is cos x, plus 0 to pi by 2 sin x plus cos x. So now integrate this. Minus sin x रो इंटीग्रेशन टा हला cos x and cos x रो इंटीग्रेशन टा हला sin x from minus pi by 2 to 0 plus sin x रो इंटीग्रेशन टा हला minus cos x plus cos x रो इंटीग्रेशन sin x from 0 to pi by 2. Okay, now this is equal to 0 put karma cos 0 plus sin 0 minus cos of minus pi by 2 minus sin minus pi by 2 plus first minus pi by 2 put karma, so cos minus cos pi by 2 plus sin pi by 2 minus of minus cos 0 plus sin 0. Okay, now the value of this कितना आसे जीवा. So this is equal to cos 0 टा हला 1 sin 0 टा हला 0 minus cos minus pi by 2 0 minus sin minus pi by 2. So minus minus plus sin pi by 2 टा हला 1, इटा हला हमर 1, इटा हला 0, इटा हला 0, इटा हला हमर minus 1, so minus minus plus 1. Cos of pi by 2 इटा भी 0, sin pi by 2 1, so plus 1 minus इटा हला हमर minus 1, so minus minus plus 1, and this is also 0. So this is equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1 is equal to 4. Okay, ये मेथड रे करि पारमा किंबा आगुटे मेथड रे भी हमें करि पारमा यूजिंग द प्रॉपर्टी. से प्रॉपर्टी टा कणा আছে जदि कोनसी गुटे फंक्शन टे इवन फंक्शन हे गला और प्रॉपर्टी कणा আছে इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a f of x dx is equal to integration from 2 into integration from 0 to a f of x dx if f of x is even and 0 if f of x is odd. ये मेथड कला भी हवा. h this function sin of mod x plus cos of mod x is an even function. कहते लगे sin of minus x plus cos of minus x x जगह जदि मैं माइनस भी पुट कर में हमें कना पामा सही sin of mod x plus cos of mod x सही f of x पाओ जो. So for this this is an even function, so the integration becomes 2 into integration from 0 to pi by 2 sin of mod x plus cos of mod x dx, and the integration, so this is equal to 2 into integration from 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 रे mod x टा positive, so this is equal to sin x plus cos x dx, and this is equal to 2 into sin x रो इंटीग्रेशन टा cos x plus cos x रो इंटीग्रेशन टा sin x from 0 to pi by 2, and this is equal to 2 into minus pi by 2 minus cos pi by 2 plus sin pi by 2 plus minus minus cos 0 plus sin 0, and this is equal to 2 into minus cos pi by 2 0, and this is 1, and minus of minus 1, so plus 1, and this is 0. So this is equal to 2 into 2 4. तो सही सेम आंसर ही आसवा में यूजिंग प्रॉपर्टी कले जल्दी डी करि पारुजु, प्रॉपर्टी यूज नाइ कले भी हेबा. ओके, एबे लास्ट नंबर देखमा. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi log 1 plus cos x. Okay, integration from 0 to pi log 1 plus cos x dx. Okay, using the property, first property हमें यूज करमा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi log of
1 प्लस कॉस एक्स जगह पाई माइनस एक्स पुट करूँ dx. Okay, now this is equal to integration from 0 to pi log of 1 minus cos pi minus x minus cos x, so this is minus cos x dx, and this is equal to integration. Or now if I is equal to this, so 2i is equal to I plus I, that is 2i is equal to integration from 0 to pi log of 1 plus cos x into a plus log of 1 minus cos x dx. Now log a plus log b, log a plus log b is equal to log ab, multiply है, so this is equal to integration from 0 to pi log 1 plus cos x into 1 minus cos x dx. Okay, 1 plus cos x into 1 minus cos x, 1 minus cos square x. So this is 1 minus, so 2i is equal to integration from 0 to pi log 1 minus cos square x dx, and 1 minus cos square x is equal to sin square x. So this is equal to integration from 0 to pi log sin square x dx. Ebe log of a to the power b is equal to b log a. So it 2 टा बाहर के पहले आसमा. So this is equal to integration from 0 to pi log of sin x dx. अब 2 टा बाहर के आसले हम 2 पहले आसला. So integration from 0 to pi log of sin x dx. So 2i is equal to this. I is equal to today cancel out हो, integration from 0 to pi log of sin x dx. Now आउ गोटे प्रॉपर्टी है, जैसे प्रॉपर्टी टा मन करमा ई टाइप रे हमें क्वेश्चन करि सारछु 0 to pi log of sin x dx केन मेथड करिजो टिके रिकॉल कर दमा. So integration from 0 to 2a f of x dx is equal to integration from 2 into 0 to a f of x dx if f of 2a minus x is equal to f of x, and 0 if f of 2a minus x is equal to minus f of x. Okay, so here, okay, ऊपर start कर दमा थोड़े. So h log of sin 2a टा कहते हैं क्या pi log of sin pi minus x is equal to log of sin x, that is f of 2a minus x is equal to f of x होचे. So I is equal to this, I is equal to 2 into integration from 0 to a 0 to a टा हला pi, a टा हवा हमर pi by 2 log of sin x dx. Okay, now we have to solve this. So हमें पाई था ना I is equal to integration from 0 to pi log of sin x dx. देखला, and I क्या हमें पाना I is equal to 0 to pi by 2 log of sin x dx. Now same method to 0 to pi by 2 log of sin pi by 2 minus x dx is equal to 2 integration from 0 to pi by 2 log of cos x dx. So this is equal to, and this is I and this is also I. So this 2i equal to integration from 2 into 2 टा common पहले आसला, integration from 0 to pi by 2 0 to pi by 2 log of sin x plus cos x, log of sin x plus log of cos x dx. Okay,
Now this is equal to 2 into 0 to pi by 2 log of sin x plus log of cos x is equal to log of sin x cos x dx. Oh, okay, now multiply 2 and by 2. So 2I is equal to 2 into integration from 0 to pi by 2 log of it है हमार sin 2x 2 sin x cos x है sin 2x minus dx minus 2 into 2 टा जगह मल्टीप्लाई होगा 2 into 0 to pi by 2 ln 2 dx. Okay, now taking 2x is equal to t, so this implies 2 dx is equal to dt, and this implies if x is equal to 0 t is equal to 0, and if x is equal to pi by 2 t is equal to pi. इस जगह हमें लिमिट चेंज कर देवा 2x जगह हमें t पुट कर देवा. So this implies 2I is equal to 2 into 0 to pi by 2 log of sin 0 to pi by 2 हमें चेंज करूँ टीटा है 0 एंड टीटा पाई 0 to pi log of sin t and dx is equal to dt by 2 माइनस 2 इंटू इतर इंटीग्रेशन टा है ln 2 एंड रही गला कहते 1 रे इंटीग्रेशन टा है x फ्रॉम 0 to pi by 2. So 2 cancel out है गला 2 cancel out है गला. Okay, now this is equal to 2I from 0 to pi log of sin t dt log of sin t dt minus 2 ln 2 and mod x from pi by 2 to 0, that is pi by 2 minus 0. Okay, now आमे जगह गोटे लिखी देना I is equal to integration from 0 to pi log of sin x dx लिखी देना. So this 0 to pi log of sin x dx t के हमें एक्सचेंज कर दे पारमा sin x dx रे. So this is equal to integration from 0 to pi log of sin x dx minus 2 ln 2 into pi by 2. ओके, और 2 cancel out है रह गला कहते pi ln 2. Now if this is equal to I, so 2I is equal to this, so if this is equal to I गोटे cancel out है जीवा, so I is equal to, so I minus I is equal to 2I minus I है गला रह गला कहते minus pi ln 2. So it है आमर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi log of 1 plus cos x. ओके, आम एंता नहीं करी आमको जिते बेले ये जगह गोटे आसला I is equal to 2 into or इंटीग्रेशन 2 into 0 to pi by 2 ln of sin x dx आसला. से जगह आम ये के I1 नहीं कि सम अदर नहीं कि आम करें जनता आम प्रिवियसली गोटे एग्जांपल रे कराइला. आउ एक्सरसाइज 9K रे भी बहुत क्वेश्चन सिमिलर टाइप रे कराई. ओके, ये जगह जेहेतु ई टर्म टा हमर आई पले आछे हमको आउ थरे से प्रॉपर्टी यूज करवा लगे नहीं पड़ा जेन प्रॉपर्टी से एग्जांपल रे यूज होते से एग्जांपल आउ थरे देखि दियो. ये क्वेश्चन टा इजीली हे जिवो. ओके, ये क्वेश्चन करवा लगे आम डायरेक्ट ये जगह रे आई पुट कर दे पारमा जेहेतु आम आई इज इक्वल टू से टर्म टा नहीं छु आई इज इक्वल टू 0 to pi log of sin t dt नहीं छु. ओके, सो एते थिला तमर इंटीग्रेशन चैप्टर सब क्वेश्चन जहाँ अच्छे सब कराई सब मेथड भी कराई. सो प्रैक्टिस करो जिते प्रैक्टिस करबो इंटीग्रेशन आम से कॉन्फिडेंटली आम करि पारमा. जिते प्रैक्टिस करमा फॉर्मूलाटा आमर आपे आपे मन रही प्रॉब्लम करी करी ही आम फॉर्मूला मन रखी पारमा. और केन क्वेश्चन रे केन मेथड हो जाबा आम प्रैक्टिस कले ही जानि पारमा.
बिना प्रैक्टिस रे बिना क्वेश्चन करिकी आम जानी नहीं पारे जे केन जगह केन क्वेश्चन यूज केन फॉर्मूला यूज हो पारे। ओके, थैंक यू।